Good morning, friends. Myself, Yuganga Prasad. I deal zoology subject from past 13 years. My education qualification is MSc BEd. Right now, I am pursuing PhD from the Acharya Nagarjuna University. So, dear students, in this session, we are going to talk about the first chapter of human physiology, that is about the digestion and absorption. Today we are going to talk about the chapter beta digestion and absorption. So this is our today's topic. So this is the first chapter of human physiology. Okay, so each and every neat examination from this digestion and absorption chapter, minimum 2 questions are visible, sometimes 3 questions are visible. So this is the neat weightage. So neat weightage for this chapter is a 2 questions minimum, maximum 3 questions are visible in the each and every neat examination. Okay, dear students, क्या होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन? द फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, द फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट. सो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है बेटा? फूड क्या होता है? बेसिक रिक्वायरमेंट होता है. किसका होता है बेटा? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट. फूड इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. Food is a basic requirement of all living organism. All living organism. तो प्यारे बच्चों, हमको एनर्जी कहां से मिलती है बेटा? फूड से मिलती है. तो फूड इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, डियर स्टूडेंट्स. ओके, सो दैट फूड प्रोवाइडिंग द ऑर्गेनिक मैटर, फूड प्रोवाइडिंग द एनर्जी. फूड किस लिए लेते हैं प्यारे बच्चों हम? फूड इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल. फूड इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल्स. So that organic materials are useful for what is the purpose? What is the uses of that food beta? The food is providing the energy and the organic materials. So that is help in the which purpose beta? That is help in the growth purpose, and that is a help in the repairing of tissues. That is help in the repairing of the tissues. Repairing of tissue. Okay. So all living organisms are requires the food substances. So that food is a helps in the which purpose beta? Providing the energy and providing the organic material which is useful for the growth and repair of tissue, repairs of the tissue. So here water we drinks. Okay beta, water we drinks, it plays a major role. It plays a major role in the metabolic activities. Which activities beta? Metabolic activities. And it prevents the dehydration. It prevents the dehydration. Okay, so that is the uses of water beta. It plays a major role in the which activity beta? Metabolic activity, and it prevents the dehydration. It prevents the dehydration beta. It prevents dehydration. So that is the purpose of water beta. And here what is mean by digestion beta? Okay, so here the molecules. So macromolecules are converts into the simple and absorbable form, my dear students. Simple and absorbable forms. The conversion of macromolecules turns into the simple absorbable form. That process is known as a digestion. Simply digestion means macromolecules, large sized molecules, it is converted into the simple and absorbable form, that is said to be the digestion. So which molecules are having a large size? As we know,
carbohydrates and proteins and lipids. So these three things are having a large sized structure. So that's why it is considered as a macromolecules. Which is considered as a macromolecules, my dear students? Carbohydrates. What is that, beta? Carbohydrates and proteins. Carbohydrates and proteins and lipids. Carbohydrates and proteins and lipids. So these are said to be the macromolecules, and these macromolecules are converted into the simple form. So here the carbohydrates are converted into the simple form, that is said to be the glucose. It is a simple form micromolecule, and the proteins are converted into the amino acid. So this is the simple form. Lipids are converted into the fatty acid, and it is converted into the glycerols. So these things are said to be the simple forms. So that's why the food substances are digested in the digestive system. ओके, सो दिस कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को हम डायरेक्टली हमारे सेल इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते बेटा. उसके लिए हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, डाइजेशन होता है. डाइजेशन क्यों होता है कि अपने बॉडी के सेल क्या करते हैं बेटा, इन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं बेटा. कैसे कर पाते हैं, जब उसके सेल्स के छोटे छोटे पीसेस जब होते हैं बेटा, वो जो स्मॉल फ्रैगमेंट्स होते हैं बेटा, उसको ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं. जो कार्बोहाइड्रेट है, जो प्रोटीन है, जो लिपिड है बेटा, उसका साइज बड़ा होता है. मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं. मैक्रोमोलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं अपने बॉडी के सेल्स, तो उसके लिए ये मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं बेटा, माइक्रोमोलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं. वो तब जाके अपने बॉडी के सेल उसको यूटिलाइज कर पाते हैं. उन चीजों से हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी मिलती है, और ग्रोथ के लिए हेल्प होता है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यू के लिए हेल्प होता है. मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? चलो हम बात करेंगे बेटा अब डाइजेशन का डेफिनेशन क्या होता है बेटा. डाइजेशन, तो डाइजेशन का डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिखेंगे बेटा, यहां पर the process of conversion of complex food substances into the simple absorbable form, that is said to be the digestion. Okay, the process of, यहां पे लिख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, the process of conversion of complex food substances turns into simple absorbable form. Simple absorbable forms is known as a digestion. The process of conversion of complex food substances. So here we are going to take the carbohydrates. So these carbohydrates are the large molecules beta. This is the carbohydrates. So these carbohydrates are the complex molecules. These complex molecules are turned into the simple absorbable form, that is said to be the glucose. The glucose, it is a simple absorbable form. Okay, the glucose we are obtaining from the digestion of carbohydrates. So that is said to be the conversion. What is that beta? Conversion of carbohydrates into the glucose. Okay, that process also said to be the digestion beta. Okay, the process of conversion of complex food substances, that is turns into the simple absorbable form, that is said to be the digestion. And digestion होने के लिए मेरे प्यारे बच्चों एक सिस्टम की जरूरत होती है अपने शरीर को. उसी सिस्टम को बोलते हैं बेटा digestive system. So for the conversion of carbohydrates into the glucose, so we requires the system. So that system is called as a DGS. DGS का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम. सो दैट डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज अ हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस. सो दिस डाइजेस्टिव सिस्टम is a help in the digestion of complex food substances. They are converts into the simple and absorbable form beta. And this digestion, it is carried by two steps. One is called as a mechanical action and the second one is called as a biochemical action. काय म्हणता बेटा आपण डाइजेशन कसं होतं बेटा? डाइजेशन कैसे होता है? दो प्रोसेस से होता है बेटा. इसके अंदर दो इन्वॉल्व होते बेटा स्टेप्स. पहला स्टेप होता है बेटा, इसको कहेंगे हम मैकेनिकल एक्शन.
क्या कहेंगे बेटा? मैकेनिकल एक्शन, मैकेनिकल एक्शन. Digestion is carried by the two steps. One is a mechanical action and the second one is called as a biochemical action. Second one is called as a biochemical action, my dear students. So, okay, the mechanical action means the food, it is taken into the mouth. It is a chewed by the help of four kinds of teeth. That is the incisors, canines, premolars and molars, beta. Okay, the physically food substances are break down in your mouth. तो फिजिकली क्या होता है बेटा? जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, तो क्या होता है बेटा? फिजिकली उसके हम क्या करते हैं बेटा? छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाते हैं. दैट प्रोसेस इज सेड टू बी द फिजिकल प्रोसेस. That is also known as a mechanical action. The mechanical actions occurs in your mouth, and the biochemical action, it is takes place in your stomach. It is takes place in your stomach. It is takes place in your intestine. The food is finally digested in your small intestine, my dear students, in the presence of enzyme. In the presence of enzyme. तो बायोकेमिकल प्रोसेस कहाँ पे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ये स्टमक के अंदर होते हैं, इस इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं बेटा. मैकेनिकल एक्शन कहाँ पे होते हैं? ये तुम्हारे ओरल कैविटी के अंदर होते हैं. ओके, दैट इज अ मैकेनिकल एक्शन एंड सम मैकेनिकल एक्शन आल्सो टेक्स प्लेस इन योर स्टमक बेटा. ओके, आगे पढ़ेंगे हम कैसे होता है. राइट, दिस इज द डेफिनेशन बेटा. ये इंट्रोडक्शन है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. उसके बाद हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों की डाइजेशन बनने के लिए क्या चाहिए? सिस्टम की जरूरत होती है बेटा. दैट सिस्टम इज सेड टू बी द डाइजेस्टिव सिस्टम. दैट सिस्टम इज सेड टू बी द डाइजेस्टिव सिस्टम. सो लेट अस वी हैव टू डिस्कसिंग अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा. क्या पढ़ेंगे हम? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे बेटा. डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव system, human digestive system. So here the human digestive system or system, it is a consist of alimentary canal and associated gland. Alimentary canal. Okay, which canal beta? Alimentary canal and digestive glands. Which glands beta? Digestive gland. Okay, right? My dear students, हम क्या पढ़ रहे हैं? Human digestive system. It is a consist of two structures. One is a alimentary canal and second one is a digestive gland. So this alimentary canal, it is a long tube. It is a long tube-like structure. It is a long tube-like structure. It is starts with the anterior pore, that is said to be the mouth, and it is ends with the another pore. So that another pore is said to be the anus. Okay, the anterior pore, it is known as a mouth. Anterior pore, it is said to be the mouth, and the posterior pore is called as a anus beta. In between the mouth and anus, so there is another organs are present. So that is said to be the oral cavity beta. It is also known as a buccal cavity, and the buccal cavity is leads into the esophagus. It is leads into the pharynx. It is leads into the pharynx, and it is opening into the esophagus. Esophagus is opening into the another portion. That portion is said to be the stomach, and the stomach is opening into the small intestine. Small intestine is opening into the large intestine. Okay, this is the alimentary canal. The alimentary canal, it is a long tube-like structure, my dear students. So that long tube-like structure, it is about 9 to 10 meters long. The alimentary canal, it is a coiled tube-like structure. It is starting with the mouth and ends with the anus. The anterior portion of the body having a mouth beta. Okay, so the mouth is opening into a cavity. Such cavity is called as a buccal cavity. Buccal cavity is leads into the pharynx. Pharynx is leads into the esophagus. Esophagus is opening into the stomach. Stomach is opening into the small intestine. Then it is leads into the large intestine, and finally it is opening into the anus beta. Undigested particles are removing out by the help of anal region beta. That is called as a egestion. Okay, so one by one we are discussing to these parts. And here, what is the digestive gland? So which glands are associated with the digestive system?
दैट ग्लैंड्स आर सेड टू बी द डाइजेस्टिव ग्लैंड। सो जो ग्लैंड डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलकर काम करते हैं बच्चों, उसी को कहते हैं हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स, दैट इज आल्सो नोन एज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंदर कौन से ग्लैंड आएंगे? द डाइजेस्टिव ग्लैंड एग्जांपल्स आर द सलाइवरी gland, and the next one is a gastric gland, next one is a gastric gland, and उसके बाद आता है मेरे प्यारे बच्चों pancreatic gland, and उसके बाद आता है बेटा liver, right, and after that intestinal gland, after that बेटा intestinal gland। देखो मेरे प्यारे बच्चों, कितने हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स? सलेवरी ग्लैंड, gastric gland, the pancreatic gland, liver and intestine. So these are undercomes the digestive gland. So these glands are secreting the enzymes. That enzymes are help in the digestion of food substances. So we have to digest the proteins and the carbohydrates and the lipids. Okay, so that's why, so these glands are synthesizing the particular enzyme, they act on the particular substrates for the डाइजेशन पर्पस। मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये हो गया एलिमेंट्री कैनाल। मुझे इतना समझ में आया कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनता कैसे है। डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है बेटा दो चीजों से बनता है। एक तो बनता है बेटा एलिमेंट्री कैनाल से, और क्या होता है बेटा डाइजेस्टिव ग्लैंड से होता है बेटा। एलिमेंट्री कैनाल कैसा है बेटा? एक लॉन्ग ट्यूब है, माउथ से स्टार्ट होता है, और एनल रीजन से क्या होता है बेटा? और एंड होता है। इस दोनों के बीच में कुछ ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, उसी को कहते हैं बेटा बकल कैविटी, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बेटा। तो एक एक के बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब करेंगे हम डिस्कस माउथ। क्या होता है माउथ? Okay, right. The first part of alimentary canal, it is said to be the mouth. For that, I am making a simple diagram here, beta. So this is a diagram, right? This is a human digestive system diagram. Dear students, just you have to see here. So this is the structure of human digestive system. Right, my dear students, right, the first part of alimentary canal is known as a mouth. This is said to be the mouth. Okay, right, the mouth, it is the first part of alimentary canal. What is a mouth, my dear students? The mouth is a transverse slit pore. What is that, beta? The mouth is a transverse slit like pore. Transverse slit like pore. It is a transverse slit like pore, and it is a bounded by lips. It is a bounded by lips. That is the upper lip, and another one is a lower lip. This is the upper lip and this is the lower lip. So what is a mouth? Mouth is a transverse slit like pore. It is a mouth is a transverse slit like pore. It is a bounded by, it is a enveloped by two structures. The upper structure is called as a upper lip, and the lower structure is called as a lower lip. So the lips are the movable structure. The lips are the movable structure, and mouth is opens into a cavity. Such cavity is said to be the oral cavity. क्या कहेंगे बच्चों? माउथ कहाँ पे ओपन होता है? जिस कैविटी में ओपन होता है उसी कैविटी को हम क्या कहते हैं? उसी कैविटी को कहते हैं हम बकल कैविटी, एंड दिस बकल कैविटी इज आल्सो नोन एज ए ओरल कैविटी. Mouth is opening into a cavity. Such cavity is known as a oral cavity. So just you have to see here. This is said to be the oral cavity. This is known as a which cavity, dear students? It is known as a oral cavity. The mouth is opening into a cavity. Such cavity is called as a oral cavity, beta. That is a very very important for the examination. क्यों एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है? इतने सिंपल के सवाल पूछेंगे? नहीं पूछेंगे. अभी सवाल आपके सामने आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों. Okay, this is called as a oral cavity, and upper side of the oral cavity there is another cavity that is said to be the nasal cavity or nasal cavity. So
So the nasal cavity and oral cavity, it is separated by the plate-like structure. That plate-like structure is called as a palate. क्या है मेरे प्यारे बच्चों? Nasal cavity and oral cavity, it is separated by a structure. That structure is going to represent the palate. उसी को कहते हैं बेटा palate. Okay? This palate, it is a plate-like structure. This palate, it is divided into two parts. It is divided into two parts. Anterior part is called as a hard palate, and the posterior part is called as a soft palate. क्या होता है पैलेट? नाजल कैविटी को और ओरल कैविटी को जो सेपरेट करने वाला जो पार्ट होता है ना प्यारे बच्चों, उसी को कहते हैं हम क्या कहते हैं? पैलेट कहते हैं बेटा। ये पैलेट किन चीजों से बनता है बेटा? पैलेट इज ए फॉर्म्ड बाय द पैलाटाइन बोन्स, pre-maxillary bones and the maxillary bones. Maxillary bones and pre-maxillary bones and palatine bones. So these are help in the formation of palate. तो पैलेट किस चीज से बनता है? पैलाटाइन बोन से बनता है। किससे बनता है मेरे प्यारे बच्चों? पैलेट इट इज ए फॉर्म्ड बाय पैलाटाइन बोन्स. It is formed by palatine bones, and this palate, it is divided into two parts. So let us we have to zoom in the palate beta. This is called as a palate. So the palate, it is divided into how many portions? Two portion, and this portion, anterior portion, this is called as a anterior portion, and this is said to be the posterior portion. This is called as a posterior portion. Okay, anterior portion and posterior portion. The palate is divided into two parts, anterior portion and a posterior portion. Anterior portion is known as a hard palate. It is known as a which palate, my dear student? It is known as a hard palate, and the posterior palate is known as a soft palate. It is known as a soft palate. मेरे प्यारे बच्चों, पैलेट कितना होता है बेटा? दो भागों में डिवाइड होता है। पहले पार्ट को बोलते हैं बेटा हार्ड पैलेट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं बेटा सॉफ्ट पैलेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हार्ड पैलेट क्यों बनता है, क्यों कहते हैं बेटा इसको? ये बहुत हार्ड होता है, बिकॉज इट इज मेड बाय बोन्स। कैसे बनता है? बोन से बनता है। बोन से जो चीज बनती है कैसी होती है बेटा? हार्ड होती है। इट इज मेड बाय बोन्स। हमने पढ़ा था द पैलेट इज मेड बाय पैलाटाइन बोन्स। जो एबी पोर्शन है बेटा किससे बनता है? हार्ड पैलेट माने किससे बनता है? पैलाटाइन बोन से बनता है। बोन से जो चीज बनती है वो कैसी होती है बेटा? हार्ड होती है। दैट्स व्हाई इट इज गिवन द नेम ऑफ हार्ड पैलेट. And the second palate is known as a soft palate. The posterior part of palate is called as a soft palate. It is made by cartilage. It is made by smooth cartilage. ये स्मूथ कार्टिलेज से बनता है तो कैसा रहेगा बेटा? स्मूथ रहेगा। तो कहेंगे हम इसको क्या कहेंगे? सॉफ्ट पैलेट कहेंगे बेटा। तो अभी देखो बेटा, यहां पर एक स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। ओके, हमने कहा है इसको हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट